अपना नाम मेंशन कर दो कमेंट में। जो भी क्लास में आ चुका है वो अपना नाम मेंशन कर दो। जैसे ही सभी बच्चे आ जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, डिक्टेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी। आज हम स्टार्ट करेंगे पैसेज नंबर 2 फ्रॉम कैलाश चंद्र मैगजीन। लाइक कर देना वीडियो को सभी बच्चे जो भी आ चुके हैं क्लास में। कमेंट कर दो, जो भी क्लास में बच्चे आ चुके हैं कमेंट कर दो। अपना नाम मेंशन कर दो कमेंट में। डिक्टेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगी, सभी बच्चों को आ जाने दो। साउंड क्लियर आ रही है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ साउंड क्लियर है। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो साउंड क्लियर है। डिक्टेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करती हूँ, बाकी बच्चों को भी आ जाने दो। गुड इवनिंग गणेश, साउंड क्लियर है गणेश? पैसेज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। गुड इवनिंग विशाल। आज पैसेज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, गो थ्रू कर लो एक बार, बाकी सबको आ जाने दो। गुड इवनिंग यश। ओके गणेश, गो थ्रू कर लो अपना पैसेज। बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करती हूँ, बाकी बच्चों को भी आ जाने दो। रेडी रहो आप लोग, अपने नोटबुक अपने साथ रखो। वीडियो को लाइक कर दो। गुड इवनिंग मानसी। मानसी पैसेज नंबर 2 स्टार्ट करूँगी, वॉल्यूम 1 का। साउंड क्लियर है मानसी? साउंड क्लियर आ रही है मानसी? ओके मानसी, ठीक है। बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन। आ जाओ सभी लोग, टाइम से ज्वाइन कर लो क्लास। साउंड सबके पास क्लियर है? विशाल, आपके पास भी साउंड क्लियर आ रही है? साउंड इज ऑडिबल और नॉट? ओके यश, वीडियो को लाइक कर दो। Okay, so now I am going to start your dictation. Passage number 2. Dictation start now. I should like now to make a few observations on the budget. This budget marks a turning point in the history of our country. It is no use attempting, as some of my friends have done, either to deprecate the budget very strongly or to suggest that we are not witnessing a new revolution in our methods of physical training.
and technique. I want it to be quite clearly pointed out to my friends that we are now facing the lean years of Indian finance hitherto. We had revenue surplus, which were a form of public saving and which were meant to be utilized for capital development. Hereafter, this form of revenue surplus would not be available. We have therefore to find out ways and means of implementing our great program of national reconstruction at minimum cost. My point is that the deficit on revenue account would be of the order of about rupees 19 to 20 crores. Here let me point out that I do not agree with those of my friends in the finance department who have attempted to suggest that rupees 9 or 18 crores which are obtained from Pakistan should be put to the revenue side of the budget. They are to be put on the capital side, but that does not seriously the trend of my argument. What I am suggesting is that we would have to be prepared for a deficit of a much higher order, even on the revenue side. That itself should make us realize that there are very many problems which we have to face and that we have to undertake ways and means of increasing the resources of our country so that it might be possible for us to have a greater amount of surplus or a greater amount of public saving for the purpose of financing capital development. The finance minister, in the course of his speech, Mr. Deputy Minister pointed out that the deficits during the past 2 years were of the order of rupees 83 crores. I venture humbly to disagree with him because I feel that when we are talking of deficits, we must take into account the overall deficit incurred by the central government, and that would be of the order of rupees 200 crores. During the years of relatively light expenditure, we had a shortfall of about rupees 200 crores. Undoubtedly, now when we are going to have a very great amount of expenditure, we might have a greater amount of deficit, and
we would have to find out ways and means of trying to meet our capital expenditure. Some members have pointed out that deficit financing is good. Others have pointed out that it is poison. One honorable member who preceded me pointed out that it could be taken like a tonic. Now, I am not willing to enter into the merits of deficit financing or demerits of deficit financing. In an academic spirit, the time has now come when we should face realities. I do suggest that we have to indulge in deficit financing because without indulging in deficit financing, it would not be possible for us to indulge in capital expenditure on such a large scale. But when we are talking of the scope of deficit financing, I would like to place before the House and the Finance Minister the two great limitations which face us. The first limitation that faces us is that concerning the internal price level. The Honorable the Finance Minister referred to the cost of living. He said that he was going to keep a watch over the cost of living so that it may not shoot up within a short period and make a mess of the plans of capital development. But there is another limitation which has also to be borne in mind, a limitation which has not received as much notice as it should have done in all the discussions that have taken place on deficit financing. That limitation is the external limitation or the limitation which arises on account of our balance of payments position. I think this is as important, Mr. Deputy Speaker, as the internal price level, and I should like to elaborate that particular point a bit more because I feel that a time will shortly arrive when we might have either to reconsider our policy or might even have to leave the sterling club of which we are a member. The second serious limitation is as serious as the first. What would be the
consequences of deficit financing on our balance of payments. The finance minister in his budget speech points out that so far as the balance of payments position is concerned, they have now, whether it is by accident or design, a favorable balance, and they have contributed about rupees 63 crores to the dollar pool during the past 6 months. But the moment we indulge in deficit financing, we have to be prepared for worsening of our balance of payments. Stop. कमेंट कर दो आप सभी का पैसेज कंप्लीट हो गया है, सबने केयरफुली लिख लिया पैसेज, साउंड बिल्कुल क्लियर थी। कमेंट कर दो, लाइक कर दो सेशन को। आप लोगों ने डिक्टेशन बिल्कुल सही लिखी है, कमेंट करो। ओके विशाल, ओके यश, ओके कृतिका, मानसी, ओके मानसी। सो आप लोग ये डिक्टेशन अपने ट्रांसलेट कर लो पीसी पे, डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लो अपने पीसी पे। ओके गणेश, ओके डन। कल हम पैसेज करेंगे, पैसेज नंबर 3 वॉल्यूम 1 कैलाश चंद्र। ओके, कोई भी डाउट हो किसी को तो कमेंट कर दो, कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो। हाँ रोहित, शॉर्ट हैंड की क्लास है ये, डिक्टेशन चल रही है, इसमें हो चुकी है डिक्टेशन कंप्लीट। ये स्टेनो की क्लास है जिसमें डिक्टेशन पैसेजेस चल रहे हैं। जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है, सेशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जिसकी डिक्टेशन पूरी हो गई है कमेंट में यस लिख दो। कल हम पैसेज नंबर 3 करेंगे, वॉल्यूम 1 कैलाश चंद्र। ओके, सेम टाइम क्लास होगी 5 o'clock। किसी को कोई वर्ड पूछना है तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है आपको टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरा। वहाँ पे आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। बाय ऑल ऑफ यू, कल क्लास होगी 5 o'clock। ओके।